So from today we will starting with the second unit of class 12 biology, that is genetics, and the first chapter is principles of inheritance and variation of this unit. तो चैप्टर का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्यों रखा गया? इसका मतलब कोई ना कोई मॉलिक्यूल या कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन से इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. जैसे न्यूटन ने ही सिर्फ ऑब्जर्व किया था कि जो एप्पल है वो ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, वो राइट लेफ्ट या ऊपर आसमान में भी उड़ सकता था. सिमिलरली वैसे ही बायोलॉजिस्ट ने भी सोचा कि ऐसा कैसे है कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दे रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स, और जो रिजेंबलेंस है वो एग्जैक्टली सेम क्यों नहीं है, व्हाई देयर आर वेरिएशंस. तो इसका मतलब कुछ तो है जो हम इनहेरिट कर रहे हैं, और उसी इनहेरिटेंस के प्रोसेस में क्या राइज हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस. तो इसी क्वेश्चन ने और इसी डिस्कवरी के करने के पीछे एक पूरी नई ब्रांच बन गई बायोलॉजी की, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज genetics. So genetic is the branch of biology in which we study about genes, DNA, chromosomes, and everything related to genetic material. We will study inheritance, we will study variations, we will study heredity. Okay. अब inheritance क्या है? इनहेरिटेंस है कि हम लोगों ने, इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, हमारे दो हाथ, दो पैर हैं, दो आंख हैं, एक नाक, दो कान, ये हमने इनहेरिट कर लिया अपने पेरेंट्स से, जो कि बेसिक ह्यूमन स्ट्रक्चर है, बेसिक ह्यूमन बॉडी है. लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स का आई कलर ब्लैक था, हो सकता है हमारा ब्राउन हो जाए, और अगर पेरेंट्स का ब्राउन था, हो सकता है हमारा ब्लैक हो जाए, या हमारा कोई और कलर चेंज हो जाए. तो इसका मतलब है हमने आई कलर, यानी कि हमने बेसिक ह्यूमन स्ट्रक्चर, दो आंखें होंगी, ये तो इनहेरिट कर लिया, लेकिन उस इनहेरिटेंस में हमने एग्जैक्टली सेम कलर इनहेरिट ना करके कोई ना कोई वहां क्या आ गई, छोटी छोटी वेरिएशंस आ गई. तो कहने का मतलब है कि जो ये इनहेरिट होके हमारे पास कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उनमें किसके भी चांसेस हैं, वेरिएशंस के. और ये वेरिएशंस कौन लेकर आ रहा है, कोई ना कोई मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट है, जो फर्स्ट जनरेशन से, यानी कि पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग जनरेशन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. सो दैट मॉलिक्यूल वी हैव टू डिस्कवर, और इसी ने क्या बना दी, बायोलॉजी की नई ब्रांच विच इज नोन एज genetics. So, in offsprings or young ones, they inherit characters from their parents, and along with this process of inheritance, there are some variation which arises. Okay, so transmission of characters from one generation to another is known as heredity. Now, the question arises, who is responsible for this transmission? That means there is something, there is some molecule who is deciding, yeah, who is responsible for this transmission, and we don't know about it. So that means we have to discover that molecule. So in this process of discovering the theory of heredity, or the molecule which is responsible for heredity, these different theories are given by different scientists. So the very first theory is vapor theory, and this theory was given by Pythagoras, the mathematician who has given Pythagoras theorem. He stated that from the living organisms की body से क्या rise होती है, we release some kind of vapors, and those vapors are responsible for the formation of new organism. Then next comes fluid theory. It is given by Aristotle, and Aristotle, he said that the male semen, the semen produced by males, and the menstrual blood of female, the semen of male is very pure, and the menstrual blood of female, it is impure. So when the pure and impure blood mixes together, they forms a new organism. Then next theory is pre-formation theory, and this theory was given by Anton von Leeuwenhoek. He said that the male semen has the potential to give rise to the new organism, and when male semen is transferred into the female womb will provide nutrition, and the semen will grow into a new organism. Okay. Then this third particulate theory, this theory stated that both males and females have some particles in their body, and when these two particles combine together, they give rise to a new organism. Now, Charles Darwin, he has given pangenesis theory. Charles has very great contribution in evolution as well. So this pangenesis theory was given by Charles Darwin, and he said that both males and females, they produce gamules, okay, a kind of particles, and when these particles along with the blood, they reaches the reproductive cells, and from when they reaches the reproductive cell, they both combine and give rise to a new organism. So pangenesis, or we can say the particle he talk about, the gamules, laterly they were discovered as
gametes of male and female, and and later on it becomes true that yes, when the gametes combine together, they give rise to a new organism. So this kind of the different theories were given.